So a red lipstick is a must in every girl's makeup kit. कोई भी आपका मेकअप किट कैसा भी हो, पर एक एटलीस्ट एक मेकअप कलेक्शन में रेड लिपस्टिक होना मस्ट है. Whether you're traveling, you're at home, or you're just going out for party, you need one. Why so? Because it completely transforms your look. You'll instantly become glam and जितना भी फेस में कुछ भी फ्लॉज होते हैं, जैसे कि मेरे केस में अगर मार्क्स या पिंपल्स, तो आपका इंस्टेंटली अटेंशन फ्रॉम दैट शिफ्ट्स थ्रू द रेड लिपस्टिक और योर मेकअप. सो विदाउट lingering upon this topic, I would just like to share with you my top favorites from the high ends, और मेरे को कौन सी अच्छी लगती है और कौन सी मेरे लिए वर्क करती है. I just want to share it with you, and if you find it useful, go grab one for yourself. Chalo, let's begin. So first up, I'm going to talk about Burt's Bees. So if you haven't heard of this brand, this is how it looks. This has a honeycomb packaging. ऐसा इसका honeycomb जैसा packaging है, and it's not a new one, so ऊपर से उतनी वैसी आपको नहीं दिखेगी, but that's the color. और when you are twisting it inside, अब तो मैंने यूज़ कर लिया, but अगर आप इसको ध्यान से बंद ना करें तो इसकी टिप क्लिक होने का डर होता है, so you have to be careful with that. प्लास्टिक पैकेजिंग है, पैकेजिंग बहुत अमेजिंग नहीं है, but it's different. It looks, you can figure it out बाकी लिपस्टिक्स में से कि कौन सी लिपस्टिक है. It's 100% natural. तो इसका नाम है Scarlet Soaked 520, और ये रास्पबेरी सीड ऑयल से, मोरिंगा से और विटामिन ई से और बी वैक्स से बनी है, एंड इट्स क्वाइट हाइड्रेटिंग एंड नेचुरल प्रोडक्ट, और एक स्मूथ सैटिन फिनिश है. आई विल शो यू बाय स्वैपिंग इट ऑन माई हैंड. दैट्स हाउ स्मूथ इट इज़. लुक हाउ सैटिनी स्मूथ इट इज़, और आपके लिप्स बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होंगे सारा दिन. यू विल फील as long as you're not eating. Once you start eating, then obviously those lipsticks wear out, but I'll show you by wearing it on my lipstick that how it looks on my skin tone. But I can bet it looks great on all skin tones because it's amazing और काफ़ी nourishing है. It lasts for around 6 hours roughly. वैसे उसमें तो लिखा हुआ है 8 hours, but it doesn't last that long. It lasts for 8 hours at least. So I'll wear it and show it to you. Taken off my lipstick. Now I'm going to wear this one. So you can see it's a sheer coverage, but अगर आप चाहें तो इसको लेयर करके थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं. So that's how it looks, और बहुत ही नेचुरल है ये. मुझे इसमें कुछ भी ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं लगता है, तो मुझे पहनने में इसको डर भी नहीं लगता. और इट्स मोर लाइक अ बाम बिकॉज ऑफ द बी वैक्स. इट्स वेरी हाइड्रेटिंग एंड इट डजंट कॉस्ट अ लॉट. हाँ, ये आपको उतनी अफोर्डेबल तो नहीं साउंड करेगी क्योंकि ये अराउंड 1350 की है, और इफ़ यू बाय इट फ्रॉम अ ऑनलाइन साइट यू माइट गेट सम डिस्काउंट्स, बट अदरवाइज इफ़ यू गेट इट फ्रॉम द स्टोर, currently they are not running any offers, so it is a good buy and it will last you long. So that's the one I like for the first pick. So the other one that I really love is by Chanel, and this is Gabrielle 19 Rogue Coco. So that's the packaging. Very nice packaging, very sleek packaging. कैसे क्लिक होता है, अच्छा लगता है. तो that's the color, that's how it looks. Very creamy finish, but amazing quality as the brand suggests. That's what it looks like, and it will also suit all the skin types. So I'll show you this on my lips.
So that's how it looks, and it makes your teeth look brighter, and it is nourishing. It is 3.5 grams और 18 months तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और it's a very high-end product, as you can see the packaging and everything. They are out of stock on Amazon, but you can grab it on any other site. So if you know anything about red lipstick, then you know this lipstick. It's by MAC. It's Ruby Woo. It's a perfect blue tone red lipstick, and 1999 में शायद ये आई थी, और I'm not sure about the year, but it made MAC stand out because of this lipstick. It is that MAC is known more. तो ये amazing lipstick मेरी all time favorite है. ये इसका ट्यूब है, ये इसका कलर ऐसा लगता है. It is a perfect matte lipstick. मुझे दिखाना नहीं आ रहा. Okay, that's how it looks, and I simply love this lipstick. मतलब ये मेरा I don't know which tube है, काफ़ी I think 4th या 5th tube होगा ये मेरा of Ruby Woo, और it's constantly out of stock. मतलब कभी भी आप इसे लेने जाएंगे ना तो आपको एक बार में नहीं मिल पाएगी. तो if you really want it, you should put it in your wish list. So I'll show you what it looks like. By the way, the Chanel one was orange undertone और ये blue undertone है. It has got vitamin E and avocado in it, but ये काफ़ी मैट है. So that's what it looks like. और ये blue undertone है इसका. It's like amazing. Perfect matte look है इसका. And I mean this is one thing you have to have in your collection. और कोई lipstick चाहे मैं इतना ना भी कहूँ, but this is one you must have. Its price in India is around 1600 something, और अब currently अब क्या update हो गया वो मैं screen पे सब डाल दूँगी और links भी दे दूँगी. But this is one lipstick that you have to own. So next up is another favorite of mine, which is by Dior, and this is how it looks. This is the packaging, and that's its name. It's Rogue Dior 743 Rogue Xania, and अगर बाकी में कोई अंडरटोन आपको वार्म था या कोल्ड था तो इसमें आपको ट्रू रेड tone दिखेगा, and that's what it looks like. That's the color of the lipstick, this one, and it's amazing to apply. 0.12 ounces है ये. आप देख सकते हैं कि कितना amazing है इसका packaging. Very couture and elite looking tube. Glides like a dream. That's what it looks like. और ये ऐसे क्लिक होता है तो आपको पता चल जाता है कि आप सही साइड से कर रहे हैं कि नहीं. So that's a good sign, because sometimes you forget to click it properly, तो ये open रह जाएगा. So this needs to be done. You can see it's a true red color, और इसमें कोई undertone red warm या cool का नहीं है, तो ये अच्छा लगता है मुझे इस वजह से. और price and everything will be on the screen, but it is my favorite because again it glides very easily. If you are in a rush तो फटाफट आप लगा के you can just rush out. Is a full coverage, you can see very nicely it glides. और जैसे matte lipsticks में you have to put little bit pressure, इसमें ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है. So it is very smooth finish. So now it's the time for another MAC favorite of mine, and this one is Lady Danger. This
tube, same tube, black tube, और that's the color. ये warm undertone है, थोड़ा orangish undertone है, और ना तो ये बहुत ज़्यादा मैट है और ना ही बहुत ज़्यादा lustrous creamy है. तो I'll show you how it applies. It's 0.10 ounces and same retails for around 1600 something rupees. I'll swatch it on my hand so that you see the difference. That's the one. So I have put it against a pinky tone so that you can see that it does look a little bit red. It might not show on the camera, but ये थोड़ा orangish red है, और it lasts you around 8 hours, और ये उतना मैच नहीं है जितना रूबी वू है, लेकिन it will brighten up your face and it lasts you for around 18 months. And 607 is the number for the lipstick. So these are all the lipsticks which I swatched today with you guys. और it was so much fun swapping these, और मैंने bare face रखा था so that you can see कि how it just completely transforms your plain face with just the base into a little bit glammed up look, और काफ़ी अपनी look को enhance कर सकते हैं सिर्फ एक red lipstick यूज़ करने से. So hope you liked the video, and if you did, give me a thumbs up and don't forget to subscribe, hit that notification bell. Until next time, take care, love you all. Mwah.